Hello everyone. So today we will discuss about the clustering partitioning method. That is the method of the clustering. We'll discuss that part today. Talking regarding the clustering, first of all, we'll discuss the basic of the clustering. That means one term which is called your inter cluster and the intra cluster. It is saying that finding groups or objects such that the objects in the group will be similar or related to one another and different from or unrelated to the groups the objects in the another. That means that is your cluster analysis. Talking regarding this picture is representing the inter-cluster and intra-cluster. Intra-cluster means you're having a distance, minimum distance between the cluster itself. Cluster में जो आपके data objects present हैं उनके बीच की जो distance है उसको हम कहते हैं बेटा इंट्रा क्लस्टर. और अगर मैं बात करती हूँ डिफरेंट क्लस्टर्स के बीच में डेटा ऑब्जेक्ट्स में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड योर इंटर क्लस्टर डिस्टेंस. यानी कि एक क्लस्टर का दूसरे क्लस्टर्स के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड योर इंटर क्लस्टर. और क्लस्टर के अंदर जो इटसेल्फ डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं उसके बीच के डिस्टेंस को हम कहेंगे इंट्रा क्लस्टर. ओके बेटा. सो मूविंग फर्दर, what is partitioning method? It is a general criteria of good partitioning is that objects in the same cluster are close or related to each other, whereas objects of different clusters are far apart or very different. That means जो आपके सेम होंगे, जो आपके सिमिलर प्रॉपर्टीज जिनके होंगी वो बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे और जिनमें सिमिलैरिटी नहीं होंगी वो दे आर फार अपार्ट. Moving further, talking regarding the different techniques of the partitioning method, basically two categorization, the k-means algorithm and the k-midwide algorithm. What does k means? Where each cluster is represented by the mean value of the object in the cluster. What we will do is that we will take the mean value of each and every cluster for calculating the distance of every object by which we can do the clustering. And talking regarding the k-midwide part, where each cluster is represented by one of the objects located near the center of the cluster. So we'll identify a data object which is near to the center. We'll make that object as a midwide, and on the behalf of that we will do the analysis. We will apply the clustering method. Okay, we'll do the numericals, then you will get a clear concept about that thing. Moving further, the centroid based technique, that is the k-means method we are discussing first. It says that the k-means algorithm takes the input parameter k and partitions a set of n objects into k clusters so that the resulting intra-cluster similarity is high but the inter-cluster similarity is low. That means I have to identify, I have to take some input parameters, I have to do the partitioning, that is on the behalf of the k value. That means I'll apply the cluster formation on the behalf of the value k. और मैं ऐसे क्लस्टर बनाना चाहूँगी जिनके बीच की आपकी इंटर क्लस्टर सिमिलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए एंड इंटर क्लस्टर सिमिलैरिटी जिनकी लो होनी चाहिए. डेफिनेटली क्लस्टर्स आपके दूर दूर हैं तो उनकी सिमिलैरिटी कम होनी चाहिए और इटसेल्फ क्लस्टर के अंदर की जो सिमिलैरिटी है वो आपकी सेम होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए या आपके नियर बाय होनी चाहिए. Cluster similarity is measured in regard to the mean value of the objects in the cluster. That means similarity can be measured with the help of the mean value of the cluster. Moving further, it says that first it randomly select k of the objects, each of which initially represent a cluster mean or the center. So first what we'll do is that we will randomly select a k point or the k of the object जो हमारा क्या होगा हमारा mean value होगा. For each of the remaining objects, an object is assigned to the cluster to which it is the most similar based on the distance between the object and the cluster mean. Talking regarding this algorithm, this is the algorithm of the k-means method. It says that the k-means algorithm for partitioning where each cluster center is represented by the mean value of the object in the cluster. टॉकिंग regarding the input values, input parameter हमारे क्या होंगे. एक तो होगा हमारा number of cluster यानी कितने cluster हमें बनाने हैं, that is equals to the k, whereas d is a data set containing n objects. Output क्या निकल के आएगा, output will be a set of k clusters. What is the method? It says that arbitrarily choose k objects from D as the initial cluster centers. Then what it says, it will repeat the process. We will reassign each object to the cluster to which the object is the most similar. हम क्या करेंगे बेटा, जब हम arbitrarily k objects को हम choose करेंगे in the initial cluster के behalf पर, उसके बाद जो आपकी mean value निकल कर आएगी उस mean value के behalf पर हम check करेंगे, हम measure करेंगे, हम reassign करेंगे उस data object को, या तो वो उसी cluster में रहेगा या आपके different cluster में move कर जाएगा. And further what we'll do is that we will update the cluster mean. We'll again and again update the cluster mean and calculate the mean value of the object for each cluster. हम mean को update करेंगे, उसके बाद उसके regarding हम analysis करेंगे. अगर हमें requirement है data object को change करने का तो हम change करेंगे, नहीं change की requirement है उसको वही रहने देंगे. लेकिन फिर से उसी process को repeatedly यानी कि फिर से हम mean value निकालेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि आपका mean वही same नहीं है. There is no change in the mean value.
दैट इज मेंशनिंग अंटिल नो चेंज, हम उस प्रोसेस को रेपिटेडली चलाते रहेंगे जब तक कि आपका मीन आपका सेम नहीं आ जाता। ठीक है बेटा, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द के मीन्स मेथड, अ वेरी सिंपल मेथड। इट सेज दैट फॉर एग्जांपल एट इनिशियल लेवल आई एम हैविंग थ्री क्लस्टर्स कंप्राइजेस ऑफ सम डेटा ऑब्जेक्ट्स, ये जो आपकी जो ब्लैक कलर की डॉट्स हैं वो आपकी वो आपके डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं। प्लस इज रिप्रेजेंटिंग द मीन वैल्यू, जो आपके प्लस इसके अंदर है वो आपकी मीन वैल्यू है। अब हमने क्या किया बेटा, इस मीन वैल्यू के बिहाफ पर मैंने डिस्टेंस को मेजर करा। डिस्टेंस को मेजर करने के बाद मैंने ये देखा बेटा, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस डॉट की बात करती हूँ, आई आइडेंटिफाइड कि इसका डिस्टेंस जो है इस मीन वैल्यू के साथ कम है, इसके साथ ज्यादा है। दैट मीन्स ये जो मेरा डेटा ऑब्जेक्ट है इट शुड नॉट बिलोंग टू दिस क्लस्टर, इट शुड बिलोंग टू द दिस क्लस्टर। तो हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट रीफॉर्मेशन ऑफ द न्यू क्लस्टर्स। यहाँ पर आपकी रीफॉर्मेशन हो रही है क्लस्टर्स की, and at the end finally we'll get this darker line is showing the new cluster value। ये जो darker line है वो आपके नए cluster के फॉर्म में बन जाएगा। And yes, again my mean value will get again change, and with the help of this mean value we'll again identify, we'll again reevaluate the data। Talking about the next algorithm, that is the k-medoid algorithm. What is the k-medoid algorithm? It is also called the partitioning around medoid. Remembering that it is also called the PAM algorithm, which was given in 1987 by Kaufman and Royce. It says that a medoid can be defined as a point in the cluster whose dissimilarities with all other points in the cluster is minimum। हम एक ऐसा पॉइंट निकालेंगे जो आपकी बाकी के जितने डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं उनका डिसिमिलरिटी जो है वो कम से कम हो। द के मीन एल्गोरिथम इज सेंसिटिव टू आउटलायर्स, जबकि के मीन एल्गोरिथम से वो नॉइस से जो थी वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी। तो बिकॉज एन ऑब्जेक्ट विद एन एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू में सबस्टेनली डिस्टॉर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। तो इसमें क्या है बेटा, अगर के मीन वैल्यू हम अप्लाई करें किसी भी क्लस्टर पे और मान लीजिए उसमें अगर कोई ऐसी वैल्यू एक बहुत बड़ी लार्ज वैल्यू है, वो क्या करेगी बेटा, डेफिनेटली आपकी नॉइज जो है वो अफेक्ट करेगी डेटा सेट को। So that means k-means is not effectively working in that part. Instead of k-mean, we can use a k-medoid because we are dealing with each and every data object of that cluster. So it says that instead of taking the mean value of an object in a cluster as a reference point, we can pick actual object to represent the cluster। हम मीन नहीं लेंगे बेटा, मीन की जगह हम कोई भी उस जो डेटा ऑब्जेक्ट आपके पास प्रेजेंट है उसमें से एक डेटा ऑब्जेक्ट उठा लेंगे और कोशिश करेंगे वो डेटा ऑब्जेक्ट आपके सेंटर के आसपास ही लाई करे। ठीक है बेटा, ईच रिमेनिंग ऑब्जेक्ट इज क्लस्टर्ड विद रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जेक्ट टू विच इट इज द मोस्ट सिमिलर। हम क्या करेंगे बेटा, जो उसकी सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स डिस्टेंस के बिहाफ पे जो मेरा आपका मिड वाइड पॉइंट है और जो बाकी के ऑब्जेक्ट्स हैं, हम डिस्टेंस के बिहाफ पर हम चेक करेंगे सिमिलैरिटी ज़्यादा है कि कम है। अगर सिमिलैरिटी ज़्यादा है तो वो क्लस्टर वहीं बना के रखेंगे, नहीं तो बाकी को हम डिफरेंट क्लस्टर में स्टोर कर लेंगे। The partitioning method is then performed based on the principle of minimizing the sum of dissimilarities between each object and its corresponding reference point। यानी कि main motive is to minimize the dissimilarity and to increase the similarity of our clusters। Talking regarding the formula, there is an absolute error criteria is used, which is called E is equivalent to summation of k, j is equivalent to 1, summation p belongs to cj, p minus oj, where E is the sum of absolute error for all objects in a data set, p is the point in space representing a given object in cluster cj, and oj is the representative object of cj। ठीक है बेटा, in general the algorithm iterates until eventually each representative object is actually the midwide or most centrally located object of its cluster। यानी कि आपकी जो एल्गोरिथम है बार बार चलती रहेगी, बार बार रिपीट होती रहेगी जब तक कि आपका जो रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जेक्ट जो मिडवाइड है वो आपका सेंटर में एलोकेट नहीं हो जाता है, यानी कि वही आपकी डिस्टेंस जो है बाकी सबके साथ इक्वली, यानी कि लेस डिसिमिलैरिटी आपकी प्रोड्यूस नहीं हो जाती। थैंक यू सो मच।